Anyhow, let's start. Today I think we have to start new chapter 5. Everyone switch on your camera and set. Okay, the chapter name is Starbucks and the Habit of Success. So the Starbucks, which we know as a coffee cafe, yes? Yes or no? You all have heard about Starbucks? Yes, ma'am. The same organization it is talking about, and the habit of success. In this chapter, we are going to study about the willpower. Okay, how willpower we need to make it automatic. Fine. This is a story of Starbucks, and again, few characters are also over here. You will be getting to know that. So the first personality is Travis. Start from here. Nishu. Yes, ma'am. The first time Travis Leach saw his father overdose, he was 9 years old. His family had just moved into a small apartment at the end of an alleyway, the latest in seemingly illness series of relocations that had most recently caused them to um, abandon their previous home in the middle of the night, throwing everything they owned into black garbage bags after receiving an क्या है eviction Notice. Too many eviction people coming and going too late at night, and the landlord said too much noise. What do you mean by this? What have you inferred from this first paragraph? What it is talking about? Nishu? No idea. Pushkar? Unmute yourself first. Yes, ma'am. What have you understood from this first paragraph? मैम एक ट्रेविस है जो 9 साल का है, अपने फैमिली के साथ एक अपार्टमेंट में मूव किया है. Okay, what do you mean by alleyway? No idea. Anyone? Alleyway गली को कहते हैं, ठीक है. ट्रेविस यहाँ पे 9 साल का है और उसकी फैमिली स्मॉल अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई है जो गली के सबसे एंड में है, और यहाँ पे रीअलोकेशन हो रहा है. उन लोगों को अबंडन करना पड़ा, घर छोड़ना, प्रीवियस घर छोड़ना पड़ा, ठीक है. रातों रात उसका जितना बिलोंगिंग था वो सारा
थ्रो कर दिया गया, अचानक से इविकेशन नोटिस मतलब क्या, खाली करने का नोटिस आया. Reason being, too many people were coming, there was lot of noise, so landlord said that you need to leave this place. Okay, fine. Yahan tak clear hai? First paragraph is clear to everyone? Yes, ma'am. Okay, proceed from here, Nishu. And Nishu, थोड़ा powerful reading चाहिए. यहाँ से शुरू करिए. Sometimes at his old house, Travis would come home from school and find the rooms neatly cleaned, leftovers leftover meticulously wrapped in the fridge, and packets of hot sauce and ketchup in Tupperware container. जब वो स्कूल से Tupperware. आता था, अपने पुराने घर के बारे में बता रहा है कि जब वो स्कूल से आता था और लेफ्ट ओवर सबको वो रैप करके फ्रिज में रखता था, सारा हॉट सॉस वगैरह, केचप. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख लिए. अच्छा, फादर, यहाँ ये लाइन हम लोग डिस्कशन नहीं किए. फादर ओवरडोज थे, मतलब यहाँ पे फादर ट्रेविस के ड्रग्स एडिक्टेड थे. ठीक है, तो पेरेंट्स के मामले में ही वॉज नॉट दैट मच लकी. ठीक है, फादर उतने अच्छे थे नहीं, तो मैक्सिमम रोल इनको प्ले करना था. फाइन. ही न्यू दिस meant his parent had temporarily abandoned heroin यहाँ पे ड्रग्स के बारे में, फॉर क्रैक, and spent the day cleaning frenzy, those usually ended badly. ठीक है, लेकिन ट्रेविस तभी सेफर फील होता था जब पूरा रूम उसको मेसी नजर आता था. ठीक है, मेसी है मतलब पेरेंट्स आर अलाइव. ठीक है, हालांकि बेसिकली पेरेंट्स में यहाँ मदर को अच्छा इंप्रेशन माना गया है. She must be in class. Okay. प्रीवियस क्लास में होंगी, वेट कर लीजिए अभी तो. ठीक है, क्या बात हो रही है कि यहाँ पे तभी सेफर फील करते हैं ट्रेविस जब मेसी रहता है रूम. ठीक है, पेरेंट्स वेयर ऑन द कॉच और देयर आईज हाफ लीडेड. व्हाट डू यू मीन बाय हाफ लीडेड? जब आप नींद में रहते हैं, हाफ लीडेड रहता है. तो पेरेंट्स काउच पे बैठे हुए हैं, आधी नींद में हैं, कार्टून देख रहे हैं. देयर वाज नो chaos एट द एंड ऑफ द हीरोइन फॉर्म. ठीक है, किसी टाइप का उधेड़ गुल नहीं था, शोर शराबा नहीं था. ठीक है, ये यहाँ तक है. प्रिया रानी, रीड फ्रॉम हियर. प्रिया रानी, roll 69. Yes, ma'am. His father was a gentleman who loved to cook and expect for a stint in the Navy. Spent his entire life within a few miles of his parents in Lodi, California. Travis' mother, by the time everyone moved into the alleyway apartment, was in prison for heroin possession and prostitution. His parents were essentially functional. एक मिनट, पॉज. मदर के बारे में क्या इंप्रेशन बताया गया? फादर तो ओवरडोज रहते ही रहते हैं, और मदर भी चूंकि हीरोइन के पोजीशन में और प्रोस्टिट्यूशन के इल्जाम में वो ऑलरेडी जेल में है. ठीक है. Yes, ma'am. His parents were essentially function addicts, and the family maintained a veneer or normalcy. They went camping every summer and on most Friday nights, attended his sister and brother's softball games. When Travis was 4 years old, he went to Disneyland with his dad and was photographed for the first time in his life by a Disney employee. The family camera had been sold to a pawn shop year before. On the morning of the overdose, Travis and his brother were playing in the living room on the top of blankets. They laid out on the floor, each That's your voice. yes, ma'am. Floor each night for sleeping. Travis' father was getting ready to make pancakes when he stepped into the bathroom. He was carrying the tube sock that contained his needles, spoon, lighter, and cotton swabs.
A few moments later, he came out, opened the refrigerator to get the eggs, and crashed to the floor. When the kid ran around the corner, their father was convulsing, his face turning blue. What is this? Travis, convulsing, What do you mean by this? ma'am, I don't know. जब वो खाना एक तो यहाँ तो हम लोग जान चुके कि उनको खाना बनाने का शौक है ट्रेविस के फादर को, ठीक है, और वो पैनकेक बनाने के लिए रेडी हो ही रहे थे और ही वाज कैरिंग अ ट्यूब शॉप दैट कंटेन नीडल्स, स्पून वगैरह वगैरह। और कुछ मिनट बाद जब ये फ्रीज खोले, एग निकाले और एग क्रैश किया फ्लोर पे, यानी एग गिर गया और किड्स दौड़ के आए और देयर फादर वाज कन्वर्जिंग, मतलब होता है वो कांप रहे थे, ठीक है, वो कांपते कांपते जमीन पे गिर गए और उनका जो फेस था वो ब्लू हो चुका था, ठीक है, हिज फेस टर्निंग ब्लू। फिर आगे क्या हुआ देखिए। Travis' siblings had seen an overdose before and knew the drill. His brother rolled him onto his side. His sister opened his mouth to make sure he would not choke on his tongue and told Travis to run next door, asked to use the neighbor phone and dial 911. My name is Travis. पुलिस का नंबर है। Yes. My name is Travis. My dad is passed out and we don't know what happened. He not breathing. Travis lied to the police operator. Even at 9-year-old, he knew why his father was unconscious. He did not want to say it in front of neighbors. 3 years earlier, one of his dad's friends has died in their basement after shooting up. When the paramedics and taken the body away, neighbor gawked at Travis and his sister while they held the door open for the gardening. One of the neighbors had a cousin whose son was in his class, and soon everyone in school had known. After hanging up the phone, Travis walked to the end of the alleyway and waited for the ambulance. His father was treated at the hospital that morning, charged at the police station in the afternoon, and home again by dinner time. He made spaghetti. Travis turned 10 a new week later. When Travis यहाँ पे क्या देखा आपने, एक तो पहले वो झूठ बोला, ठीक है, कि पहले तो वो चक्कर खा के या कांपते कांपते वो गिर गए थे फ्लोर पे, और यहाँ पे इसने फोन करके ये बताया कि ये चल बसे है, माय डैड इज पास्ड आउट, फाइन। इसके अलावा जब ले करके जाया गया, फिर एम्बुलेंस बुलाया गया और वहां पे फिर वो फाइनली ठीक हुए, जिसकी वजह से, झूठ बोलने की वजह से उनको पुलिस स्टेशन में चार्ज भी किया गया और फिर होम वापस आ चुके डिनर टाइम पे, और उसके फादर स्पैगेटी बनाए और तब तक ट्रेविस 10 साल का हो चुका था, फाइन। अब आगे देखिए। When Travis was 16, he dropped out. एक मिनट, किसी और को बोलिए। सुरभि पांडे। Yes, ma'am. When Travis was 16, he dropped out of high school. I was tired of being called a faggot, he said. Tired of people following me home and throwing things at me. Everything seemed really overwhelming. It was easier to quit and go somewhere else. He moved to our south. Overwhelming है, this word you are saying again and again. What do you mean by this? मैम मतलब बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बेचारे को गाली पड़ रहा है, सब लोग पीछे पीछे घर तक पीछा कर रहे हैं, हाँ, सामान फेंक रहे हैं उसके ऊपर, उसको अच्छा फील होगा क्या? ओवरवेल्म का मतलब होता है दैट इमोशन विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है। अच्छा या बुरा आप सेंटेंस पढ़ के पता कर सकते हैं। ओवरवेल्म दैट द समथिंग व्हिच वी कैन नॉट एक्सप्रेस, वेदर आई एम हैप्पी और वेदर आई एम सैड, वेदर आई एम हर्ट, ठीक है, उसको हम लोग ओवरवेल्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 16 का जब वो हुआ, 10 साल तक आप देखिए कि क्या क्या हुआ ट्रेविस के साथ, और जब 16 साल का हो गया वो, उसको हाई स्कूल भी ड्रॉप आउट करना पड़ा।
ठीक है, तो इतना चीज जो ट्रेविस की लाइफ के बारे में बताया जा रही है, बेसिकली अपनी लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं कि बहुत की लाइफ में ऐसा होता है कि कंटिन्यूस एक फ्लो ऑफ नेगेटिविटी होता है हमारी लाइफ में। बहुत की लाइफ में, सबके साथ तो ऑब्वियसली नहीं, लेकिन बहुत की लाइफ में ऐसा होता है कि जब से शुरू करते हैं अपनी जिंदगी तब से सिर्फ नेगेटिव चीज ही देखते रहते हैं। ठीक है, एक टाइम आता है हम लोग टोटली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो हाउ यू कैन रिकवर फ्रॉम दीज थिंग्स, ठीक है, दैट यू विल कम टू नो इन दिस सेशन। ओके, प्रोसीड फ्रॉम हियर। He moved to our south to Frenso and got a job at a car wash. He was fired for insubordination. Okay, what is this word insubordination? He was fired for insubordination. Are you writing these words or just listening to these words? Because if you are not going to use, then it will be of no use to listen or to make you understand the words. The people are writing or not? Insubordination मतलब क्या होता है? Subordination मतलब तो जानते होंगे आप, subordinate of someone, your management student, come on, subordinate, supervisor, ये सब तो सुने होंगे ना, principle of management तो फर्स्ट सेम में ही है आप लोगों का, हाँ? Yes, मैम सबऑर्डिनेशन मींस किसी के अंडर काम करने में, किसी के अंदर काम करना, और इनसबऑर्डिनेशन जस्ट अपोजिट ऑफ दैट कि यू आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। ठीक है, ही वाज फायर्ड फॉर इनसबऑर्डिनेशन मींस यू आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर सुपीरियर। ओके, दैट्स व्हाई ही वाज फायर्ड फॉर इनसबऑर्डिनेशन। कब फायर्ड, यहाँ जॉब के बारे में मत नहीं करिएगा, ठीक है, ये तो हाई स्कूल का ये किस्सा था इसका। 16 साल में जब वो हाई स्कूल छोड़ा, उसके बाद वो साउथ मूव किया और वहां पे गॉट अ जॉब एट अ कार वॉश। ठीक है, अब कार वॉश में भी जॉब मिला उसको, तो वहां भी इनसबऑर्डिनेशन के लिए वो फायर कर दिया गया। ओके, देन व्हाट हैपेंड अगेन, ही गॉट जॉब एट मैकडॉनल्ड्स एंड हॉलीवुड वीडियो। लेकिन वहां पे भी, बट व्हेन कस्टमर्स वर रूड, आई वांट रैश ड्रेसिंग यू मोरन, he would lose control। यहाँ मैकडोनल्ड ज्वाइन करने के बाद भी कोई एंग्री कस्टमर आ जाता था, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता था। ठीक है, check out from here. Now Rohit Singh, read from here. Get out of my drive flow. Rohit Singh, you are there? Yes, ma'am. He got job. He got job at McDonald's and ball. He got job at McDonald's and Hollywood Video, but when consumers were rude, I wanted ranch dressing your moron. He would lose control. Get out my drive-through. He shouted at one woman throwing the chicken. Shouted at one woman throwing the chicken nuggets at her car before his manager pulled him inside. Sometimes he didn't get so upset that he would start crying in a middle of of a shift. He was often late, or he had to take a day off for no reason. In the morning, he would yell at his reflections in the mirror, order himself to be better, to shut it up. But he could not get along with people, and he wasn't strong enough. Not able to hear you. Strong enough to? Lost connection or what? Okay, Ravi Shankar. Yes, ma'am. Read from here. And the line at his register. Okay, ma'am. When the line at his register would get too long and the manager would shout at him, Travis' hands would start shaking and he did feel like he couldn't catch his breath. He wondered if that is what his parents felt like, so defenseless against life when they started using drugs. One day,
One day, a regular customer at Hollywood Videos who did gotten to know Travis a little bit shouted he think about working at a Starbucks. We are Okay, so opening a here new we store got on me front again. Washington. Hold down. One Okay, more ma'am. turn in his life. A regular customer at Hollywood video told him or suggested him to work at Starbucks. Okay, so finally, what was the change in his life? Read. You there? Mute है रवि शंकर आप. Sorry, ma'am. We are opening a new store on front Washington, and I am going to an assigned manager. The man said, Yeah. you should apply. A month later, Travis was a barista on a morning shift. That was यहाँ 6 इसको years एक ago. मिनट. इसको क्या पढ़ रहे हैं आप? Assistant. हाँ. That was 6 years ago today. At 25, Travis is the manager of two Starbucks where he observed 40 employees and is responsible for revenue exceeding $2 million per year. His salary is $44,000 and he has a, what ma'am, 401k and no debts. He's never late to work. He does not get upset on the job. When one of his employees start crying after a customer screamed at her, Travis took her aside. तो यहाँ आपने क्या देखा, कैसे टर्न हुआ इसका लाइफ. अब तक ट्रेविस के लाइफ में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी भरा था. ना वो स्कूल में अच्छा परफॉर्मर था, ठीक है. इवन वो जो जॉब ज्वाइन किया उसमें भी अच्छा परफॉर्मर नहीं था. आपने देखा कैसे उसको निकाला गया, ठीक है. तो ये लाइफ टर्निंग था जब वो स्टारबक्स ज्वाइन किया. और अभी 6 ईयर तक वो स्टारबक्स में ही है. और अभी क्या ओन कर रहा है वो टुडे एट 25 इयर्स का है. और ट्रेविस वहाँ पे मैनेजर है. और वेयर ही ओवरसीज 40 एम्प्लॉइज. और इसका रेवेन्यू है $2 बिलियन पर ईयर के रेवेन्यू पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर है. सैलरी ये है इसका. नो डेट, कोई भी कर्ज वगैरह नहीं है इसके ऊपर. कभी काम पे वो लेट नहीं आता, ठीक है. कभी जॉब से वो अपसेट नहीं होता. तो ये अभी इसका अचीवमेंट है. तो दिस आगे आप देखेंगे कैसे आखिर स्टारबक्स ज्वाइन करने के बाद ये लाइफ चेंजिंग कैसे हुआ इसकी, ठीक है. आखिर स्टारबक्स जैसी कंपनी क्या ऐसा की उसके साथ जो वो चेंज हुआ. ओके और आगे ये बता रहे हैं कि स्टारबक्स वाज द बेस्ट थिंग व्हिच हैड हैपेंड इन हिज लाइफ. तो व्हाई, come to know from here. Your apron is a shield, he told her. Nothing anyone say will ever hurt you. You will always be as strong as you want to be. He picked up the lecture is one of his Starbucks training courses and education program that began of his first day and continuous throughout an employee's career. The program is sufficiently structured that he can earn college credit by completing the modules. The training has, Travis say, changed his life. Starbucks has taught him how to live, how to focus, how to get to work on time, and how to master his emotions. Most crucially, it has taught him willpower. ओके फाइन. तो स्टारबक्स को बेसिकली यहाँ पे अगर बिग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बोला जाए है तो वैसे कॉफी कैफे ही, लेकिन अगर एजुकेशनल क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर बोला जाए तो ये गलत नहीं होगा. क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे लोग ज्वाइन करते हैं तो तुरंत से उसको काम पे नहीं डाला जाता है. यहाँ पे लोगों को ट्रेन किया जाता है, ठीक है. वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है जहाँ पे वहां पे बताया जाता है कैसे आप लाइफ जिए, कैसे आप फोकस कर सकते हैं, कैसे आप टाइम पे काम पे आ सकते हैं, अपने इमोशंस पे कैसे मास्टर कर सकते हैं. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि आप विल पावर कैसे आपका स्ट्रांग बना सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे है लाइन लिखा हुआ, स्टारबक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज एवर हैपेंड टू मी. ही टोल्ड मी आई ओ एवरीथिंग टू दिस कंपनी. ठीक है, हम कर्जदार हैं इस कंपनी के, क्योंकि जो अच्छा हुआ है एक लाइफ चेंजिंग हमारे लिए स्टारबक्स ही लेकर के आए. हाउ प्रोसीड.
यहाँ से कौन पढ़ेंगे? आदित्य सिन्हा, आज अनम्यूट हो रहा है आपका माइक। आज तो आवाज नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट तो हो गया। Still not able to hear you. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। श्रुति रंजन, not able to hear you Aditya, whether you need to change your headphone or something. तो इसका इशू आ रहा है। Yes, ma'am. Shruti, you start. For Travis and thousands of others, Starbucks, like a handful of other companies, like succeed in the teaching the kinds of life skills that schools, families, communities help fail to provide. With more than 137,000 current employees and more than the 1 million alumni, Starbucks is now in the sense one of the nation's यहाँ पे स्टारबक्स को एडुकेटर की तरह बोला गया है। educated. नेशंस लार्जेस्ट एडुकेटर। All of those employees in their first year alone spend at least 50 hours in the Starbucks classroom and dozen more at home at Starbucks work यहाँ with पे and देख रहे हैं, training. इन देयर फर्स्ट ईयर अलोन, एक पहले ही साल में एम्प्लॉइज को यहाँ पे स्पेंड करना होता है एटलीस्ट 50 आवर्स इन स्टारबक्स क्लासरूम एंड डजन्स मोर एट होम विद स्टारबक्स वर्कबुक। इसके अलावा वर्कबुक दिया जाता था एंड टॉकिंग टू अ स्टारबक मेंटोर्स असाइन टू देम। इसके अलावा सबको मेंटोर असाइन किया जाता था जिससे उनको कुछ भी डिस्कशन वो कर सकते थे। प्रोसीड। At the core of that education is an intense focus on an all-important habits. Willpower. Dozens of studies shows that willpower is a single most important keystone habits for individual success. In 2005 study, ये विल पावर से रिलेटेड ये नेक्स्ट आपके सामने एक्सपेरिमेंट है 2005 में जो किया गया, ठीक है। तो फॉर यू ऑल एज एन स्टूडेंट और चाहे हम लोग हो, विल पावर इज वेरी मच एसेंशियल इफ यू वांट टू अचीव समथिंग। आपको कुछ भी करना है लाइफ में, इफ यू हैव स्ट्रांग विल पावर यू विल बी एबल टू डू दैट। इस चैप्टर में बेसिकली बताया गया कि विल पावर कुछ गॉड गिफ्टेड नहीं होता या बचपन से हम लोग डेवलप करके नहीं आते, ठीक है। विल पावर हम चाहें तो उसको मतलब डेवलप कर सकते हैं। कैसे डेवलप कर सकते हैं ये सारा हर चैप्टर में जैसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया गया है वैसे यहाँ भी बताया जा रहा है। एक्सपेरिमेंट डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च किया गया है और तब फाइनल कंक्लूजन क्या है। इस चैप्टर में बहुत सारा रिसर्च आप देखेंगे। तो पहला रिसर्च ये आपके सामने 2005 में क्या चेक किया जा रहा है यहाँ पे, show that willpower is the single most important keystone habit for individual success। ये सबसे important keystone habit है। अगर किसी में अगर विल पावर अगर अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो किसी को भी सक्सेस होने से रोक नहीं सकता, ठीक है। तो क्या एक्सपेरिमेंट किया गया देखिए। in 2005 study, for instance, research from the University Pennsylvania analyzed 164 18th grade students, measuring their 164 स्टूडेंट हैं 8th ग्रेड के हैं यानी 8th क्लास के हैं और उनका आईक्यू मेजर करना है और अदर फैक्टर इंक्लूडिंग हाउ मच विल पावर द स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेट एज मेजर्ड बाय टेस्ट ऑफ देयर सेल्फ डिसिप्लिन। ओके, यहाँ से students who exerted a high level of willpower were more likely to earn high grades in their classes and gain admission into a more selective schools. He had favorable absence and spent less time watching television and more hours on homework. Highly self-disciplined and adherence outperformance, they mode impulsive depends on the every academic performance variable. The research board self-discipline predicted an academic perform more absolutely than the IQ. Self-discipline also predicted which student won improve their grade over the course of the school year. Where IQ has not a self-discipline has a bigger effect on academic performance than does intellectual talent.
ओके सो ऐसे स्टूडेंट जिनके पास सेल्फ डिसिप्लिन था वो ग्रेजुअली बेटर इम्प्रूव किए, ठीक है। ये लॉन्ग प्रोसेस है ये रिसर्च का। आगे देखा गया कि जिसका अच्छा आईक्यू है वो उतना आउट परफॉर्मर नहीं है, लेकिन जिसका जो सेल्फ डिसिप्लिन है हैज बिगर इफेक्ट ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड देन डज इंटेलेक्चुअल टैलेंट। ठीक है, आगे बढ़िए। And the best way of strengthen willpower and give a student a leg up study indicated is to make it into a habit. Something it look like a people with great self-control area working hard, but that because they have made to automatic and Aginla Druckwards, one of the university and Panthevaria researcher told me the willpower occur without them having even to think about it. From here, For Starbucks, willpower. hold down. Pushkar, you read. For Starbucks, willpower is more than an academic curiosity. When the company began plotting its massive growth strategy in the late 1990s, executives recognized that success required cultivating an environment that justified paying for $4 for a fancy cup of coffee. The company needed to train its employee to deliver a bit of joy alongside later and scones. So early on, Starbucks started researching how they could teach employees to regulate their emotion and marshal their self-discipline to deliver a brush of pep with every serving. Unless baristas are trained to put aside their personal problem, the emotion of some employees will inv- inevitably in, inevitably split into how they treated customers. However, if a worker know how to remain focused and disciplined, even at the end of 8 hours shift, they will deliver the higher class of fast food service that Starbucks customer expected. ओके तो यहाँ क्या बात हो रही है कि यहाँ स्टारबक्स में विल पावर को एकेडमिक क्यूरियोसिटी से ज्यादा बड़ा माना जा रहा है। रीजन भी कि यहाँ पे $4 का आपका एक कप कॉफी मिलता है, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय को बेसिकली वो ट्रेन करना था कि कैसे वो मुस्कुराते हुए या प्लेजेंटली या कितने अच्छे से वो कस्टमर को ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ ये इनएविटेबल है, पुष्कर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रहा था। इनएविटेबल स्पेल इनटू हाउ दे ट्रीट कस्टमर को कैसे ट्रीट करेंगे 8 आवर की शिफ्ट के बाद भी वो लोग कैसे अच्छा सर्विस दे सकते हैं, ठीक है, जो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है। फाइन। The company spent millions of dollars developing curriculum to train employees on self-discipline. Executives wrote workbooks that in effect serves as guide to how to make willpower a habit in worker living. Those curriculum are in part by why Starbucks has grown from a sleepy little company into a behemoth with more than 17,000 store and revenue of more than 10 billion dollar a year. So how does Starbucks do it? How do they take people like Travis, the son of drug addictive and a high school dropout who could not muster enough self-control to hold down a job at McDonald's, and teach him to oversee dozens of employees and tens of thousands of dollars in revenue each month? What precisely did Travis learn?
ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आखिर स्टारबक्स कैसे ऐसा कर पाता है जो ट्रेविस जैसे इंसान को भी इस तरीके से सुधारा। ट्रेविस का क्या कंडीशन था? ही वाज द सन ऑफ ड्रग एडिक्ट्स, ठीक है, हाई स्कूल ड्रॉप आउट, जो अपने सेल्फ कंट्रोल नाम का कोई चीज नहीं है, ठीक है, अपना मैकडोनल्ड में जॉब वो इसी वजह से खो दिया। एंड टीच हिम टू ओवरसी डजन ऑफ एम्प्लॉय। इसके अलावा ट्रेविस के अलावा बहुत सारे एम्प्लॉयज को ये मतलब समझिए कि इम्प्रूव किए हैं। 10,000 of dollar इन रेवेन्यू ईच मंथ, इतना वो कमा रहे हैं। व्हाट प्रिसाइजली डिड ट्रेविस लर्न, ठीक है, आखिर ट्रेविस क्या सीखे? यहाँ से अमृता। Everyone who walked into the room where the experiment was being conducted at Case Western Reserve University agreed. Again, यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट पे ध्यान दीजिएगा। Another experiment in Case Western Reserve University. The cookies smelled delicious. They had just come out of the oven and were peeled in a bowl, oozing and chocolate chips. Amrita, peeled means छीलना. We are not peeling cookies. Piled in a ball, हम लोग पाइल करके रखे हैं, मतलब बाउल में सारा पीसेस रखा हुआ. That is piled in a bowl, not peeled. Piled in a bowl, oozing with chocolate chips. Oozing out, कुछ भी ooze करना, जैसे चीज पिज्जा खाते हैं, चीज आर oozing out, use this word. तो यहाँ पे बात हो रही है कुकीज के बारे में, जो बहुत अच्छा खुशबू कर रहा है, डिलीशियस खुशबू कर रहा है, ठीक है, जस्ट ओवन से निकला हुआ है, जहां से पूरा चॉकलेट चिप्स पूरा ऊज आउट कर रहा है। मुंह में पानी आया अमृता? यस। On the table next to the cookies was a bowl of radishes. All day long, hungry students. मूड खराब होगा। यहाँ पे एक साइड चॉकलेट वाला कुकीज रखा हुआ है, एक साइड एक कटोरा आपका रेडिश रखा हुआ है, ठीक है, और पूरा दिन आपको एक हंग्री स्टूडेंट है, पूरा दिन भूखा रखा गया है, और उसके सामने दोनों खाना रखा हुआ है, एक बाउल में आपका मूली, एक बाउल में आपका कुकीज, and submitted unknowingly to test to their willpower that would upend our understanding of how self discipline work, कैसे self discipline work कर रहा है, ये यहाँ पे चेक करना है। फाइन, अब थोड़ा फीलिंग के साथ पढ़िए, फील ले लेके पढ़िए, और जो सुन रहे हैं वो भी फील लेके सुनिए। At that time, there was relatively little academic scrutiny into willpower. Psychologists considered such subject to be aspects of something they called self-regulations, but it wasn't a field that inspired great curiosity. There was one famous experiment conducted in 1960s in which scientists at Stanford had tested the willpower of a group of 4-year-olds. The kids were brought into a room and presented with a selection of treats including marshmallows. They were offered a deal. They could pause. ये एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यूशन में बताने से पहले ये लोग क्या कर रहे हैं कि बताया जा रहा है कि इस मामले में पहले का कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, रिसर्च नहीं किया गया। एक एक्सपेरिमेंट है 1960 में किया हुआ, जो स्टैनफोर्ड के साइंटिस्ट ने किया था, टू टेस्ट द विल पावर, जहाँ पे 4 साल के बच्चे को के ग्रुप को बेसिकली ये मार्शमैलो सामने रखे। ये आप सुने भी होंगे, मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट, हैव यू हर्ड अबाउट दैट? मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना है पहले? ये मैम पहले वाले चैप्टर में था। मार्शमैलो तो नहीं था मैम, था मैम, आप बताई थी। आई डोंट रिमेम्बर। तो 4 इयर्स का यहाँ पे बच्चा है, उन लोग का ग्रुप है, और सामने मार्शमैलो रखा हुआ है, और यहाँ पे बोल दिया गया है कि आप लोगों को खाना नहीं है तब तक जब तक हम वापस ना आए। जो भी पर्सन है, जो भी एडल्ट पर्सन है वहां पे, जब तक हम वापस ना आए तब तक आपको खाना नहीं है, और अगर आप नहीं खाते हैं तो आपको एक की जगह 2 मार्शमैलो मिलेगा, और अगर आप खा लेते हैं तो यू हैव लॉस्ट। ओके, ये एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे। प्रोसीड। The kids were brought into a room and presented with a selection of treats including marshmallow. They were offered a deal. They could eat 1 marshmallow right away, or if they waited a few minutes, they could have 2 marshmallows. Then the researcher left the room. Some kids gave
gave in to a temptation and ate the marshmallow as soon as the adult left. About 30% managed to ignore their urges हाँ, and doubled their treat when the researcher came back 15 minutes later. Scientists who were watching everything from behind the two-way mirror kept carefully track of which kids had enough self-control to earn the second marshmallow. तो पूरे ग्रुप में आपने देखा मात्र 30% ही ऐसे लोग थे जो अपने अर्ज को इग्नोर किए, जिसकी वजह से उनको डबल ट्रीट मिला। बट एक्सपेरिमेंट यहाँ खत्म नहीं होता है, ठीक है। आगे इन्हीं सारे बच्चों को, क्योंकि 4 साल का बच्चा है, इन्हीं बच्चों को आगे फर्दर ट्रैक किया गया, ठीक है, कि आखिर वो लाइफ में कैसे हैं। जो इग्नोर किए, जो वेट किए, अपने अर्ज को इग्नोर किए, वो ज्यादा सक्सेसफुल हैं, या जो खा लिए वो ज्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है। आगे चलो। Years later, they tracked down many of the student participants. By now, they were in high schools. The researcher asked about their grade and SAT scores, ability to maintain friendship, and their capacity to cope with important problems. They discovered that the 4 years old who could delay gratifications the longest ended up with the best grades and with SAT score 210 points higher on average than everyone else. They were more popular and did fewer drugs. If you knew how to avoid the temptation of marshmallow as a preschooler, it seemed you also knew how to get yourself to class on a time and finish your homework once you got older, as well as how to make friends and resist peer pressure. It was as if the marshmallow ignoring kids had self-regulatory skills that gave them an advantage throughout their lives. तो आपने यहाँ आपने क्या देखा कि जो मार्शमैलो इग्नोर किए वो क्या कर पा रहे हैं। एक तो वो ड्रग्स बहुत कम ले रहे हैं, ठीक है, मतलब समझिए एडिक्शन नहीं है उनको। फ्यूअर मतलब होता है नेग्लिजिबल, ठीक है। और इफ यू न्यू हाउ टू अवॉइड टेम्पटेशन, मार्शमैलो का टेम्पटेशन अगर आप अवॉइड करना सीख गए तो आप क्लास का होमवर्क के बारे में डिस्कशन हुआ है वो आप टाइम पे फिनिश कर पा रहे हैं, फ्रेंड आप बना पा रहे हैं, पीयर प्रेशर आप रेसिस्ट कर पा रहे हैं, रोक पा रहे हैं, ठीक है, आपके ऊपर अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। इट वाज एज इफ मार्शमैलो इग्नोरिंग किड्स हैड सेल्फ रेगुलेटरी स्किल। उनको एक सेल्फ रेगुलेटरी, अपने आप को रेगुलेट करने का स्किल है उसके पास, जिसकी वजह से उनको एडवांटेज मिल रहा है थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है, और कंपैरेटिव टू दोज पर्सन हु एट मार्शमैलो। फाइन। ये था आपका पहले जो 1960 में हुआ था एक्सपेरिमेंट। उसके बाद फिर आप ये कंटिन्यू होगा वो पहले वाला कुकीज वाला एक्सपेरिमेंट। बट आज तो हमारे पास टाइम ओवर हो चुका है। आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से पेज नंबर 154। रिमेम्बर अमृता? ओके, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। मैम वो पीर प्रेशर का मीनिंग क्या बताई थी? पीयर प्रेशर मतलब जहां आप काम कर रहे हैं, आपके कलीग का प्रेशर या सुपीरियर का प्रेशर, उसको हम लोग पीयर प्रेशर कहते हैं। आसपास के लोग जो आपके रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जब आप जाएंगे, या जैसे अभी कॉलेज में आप लोग हैं, कॉलेज के सारे स्टूडेंट का प्रेशर, ठीक है, कोई आपको ह्यूमिलेट कर रहा है, अच्छा ट्रीट नहीं कर रहा है, तो सब इसको पीयर बोलते हैं। सहपाठी या साथ में काम करने वाले को हम लोग पीयर बोलते हैं। ओके, यस मैम।
respond to your roll number. Roll number 1, 2, 2 present, ma'am. 3, 4, 5, Present, 6, ma'am. Yes, ma'am. 6. 7, 8, 9, 10, Present, 11. ma'am. 10. Okay, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ma'am. 21. 22, 23, 24, 25, 26. 25, ma'am, present. Okay, 26, 27, 28, 29, 30. Yes, ma'am. 30, 29. ma'am. 30, ma'am. Okay, 29 is also there. Yes. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, Yes, ma'am. 36. 37, 38, 38, Yes, ma'am. 39, 40, 40. Parvinder to thi. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 48, 49, 49, 50, 51, 52. Present, ma'am. 51. मैम 52 भी प्रेजेंट है, उसका अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। ओके 50 भी है, 53, 54, 55, 56, 57, Ma'am, 56 present. 52 57. प्रेजेंट है। कौन? 52 ऑलरेडी शेयर तो कर रही हूँ स्क्रीन, तो देखिए मैम एब्सेंट दिखा रहा है वहाँ। कहाँ पे 52? यस मैम। क्या बात कर रहे हैं, ये क्या है 52 प्रेजेंट? मैम 40 present है. इधर आ गया है 57, 58, जिसका अनम्यूट नहीं हो पा रहा है रेज योर हैंड। 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 62 present, ma'am. 64, 65, 66, 67, 67 present, ma'am. 68, 69, Ma'am, 69 present, ma'am. 70, 71, 72, 73, 74, 75, Present, ma'am. 75, okay, 76, Yes, ma'am. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Yes, ma'am. 96. Okay, 97, 98, 99, 100. 99, ma'am. 100, 101, 101 मैम। 101 मैम। इसीलिए गुस्सा आता है। देखिए कहाँ से आता है आखिर आवाज अटेंडेंस के टाइम। मैम मैम उस टाइम अनम्यूट किए थे मैम, बट पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था। 102, 103, 102, 102, 102. Okay, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. Yes, ma'am. 108. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114 तक। Excuse me, ma'am. मैम 55 मैम। Ma'am, एक बार 57 को चेक कर लीजिए ना, please. 57. Ma'am, she is present in the class. उसका mic unmute नहीं हो रहा है. Ma'am 40. Thank you, ma'am. मैम 55। डन, और एक और 40 Yes, मैम ma'am एक 40. 52 भी मैम। हो चुका है। अगर 52 सब लोग क्यों बनवा रहे हैं भाई? ज्यादा पॉपुलर है क्लास में क्या? नो मैं मैसेज किया था। बहुत लोग बोल चुके हैं 52 ऑलरेडी बन चुका है। चलिए थैंक यू। 55 हो गया ना? हाँ हाँ हाँ। ओके, सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। और आदित्य अपने साथ धोखा कर रहे हैं। ओके